Hello, welcome everyone. Welcome to Odisha Civils. As we start kariba, today we are going for our second series. That is again as you would mix that is your geography and environment. So this questions series consists of your enough questions from geography and your environment also. So what I found the benefit of discussing such questions has broadened your horizon. Not only that, it has also strengthening one's conceptual ability. The ideas how to approach in the exams, which is and however the overall the tricks. So that gives an immense benefit, and the major objective of why we choose why you choose these questions and overall to get an A's in exam oriented environment. So that tricks is always important. So it bina tricks se kichhi bhi jinso hueni, and tricks is always important. Okay. So let's move. Aaj hame start kariba. Geography both geography and environment will the start right. Okay. Okay. First start kari, we'll go for the first from the geography questions, right? Is it audible? I guess. Okay. First question देखियो one by one. Examine the following statement. Question देखे examine the following statement and select the correct answer using mix of अच्छी OPSC level और UPSC standard data का mixing अच्छी. It would be easier for all of you to go through. First question is the comets are among the most unpredictable bodies in the solar system. बड़े कौन हो ये chapter टा तमर आसुची कोटू. This chapter from your जब लिखो astrology or cosmology basically cosmology रो इटा आसुची. Cosmology questions जदि हमें UPSC रे देखिबा 2023 or 23 or 24 रे भी सामने पचार. Even if है ना these are not relevant वर्तमान the syllabus हमार same अच्छी as we know, right? So देखिबा comets are among the most unpredictable bodies in the solar system. Comets are made up of frozen gases, right? Comets are your elongated orbits. Follow the elongated orbits. Comets are visible only after they have moved within the orbit within the Saturn, right? Orbit of the Saturn. So answer कोटा में देखिबा ABCD भितरु. Let's see. ABCD भितरु देखिबा first question देखिबा इथरे comets are among the most unpredictable bodies in the solar system. बिल्कुल absolutely correct because they are not predictable. First thing. Comets are made of frozen gases. Absolutely correct. Comets means those who are long tail basically. Plus shadow zone में सामने move करती. Comets follow the elongated orbits. Absolutely correct. Comets are visible only after they have moved within the orbits of the Saturn. Orbits of the Saturn, they are more visible. So they all are correct. ABCD भितरु D is the correct answer, right? D is the correct answer. Answer is D. Every questions, these are the very fundamental. Okay. So let's see. Question number 2 देखिबा. Examine the following statement and select the correct answer using the code given below. It पूरी कोड आसीला बड़े एटा हला तमरो standard time zone हला standard time zones जोटा कि हमको latitude longitude. This questions को chapter एटा आसी तमरो latitude and longitude, right? Latitude and longitude. आगु को भी बहुत जेतला आसीओ हम प्रैक्टिस तुमको करे देबी इथरे कि you should know how कितने important जदि हमें देखिबा कि latitude longitude रो OPSC जदि मु हमें देखिबा 2021 or 22 रे गोटे पचारथिला क्वेश्चन समाने mathematical solutions, mathematical problems, and that covers in this chapter latitude longitude. जानिबा वर्तमान international line is associated at 180 degree longitude. Absolutely correct. 180 degree longitude रे international line जदि हमें देखो international line रे this is your 180, this is हला तमर 0 degree. International line जदि हमें देखिबा हला international line is located at 180 degree longitude. Actually कौन हुए 0 ରୁ 180 degree and एपटे north and south जदि हमें देखिबा north and south, sorry, east and west. This is हला 180 degree east and this is 180 degree west. It is exactly at the opposite of the 0 degree.
since earth is an having geoid shape जेतु अछि और spherical oblate shape, so 0 degree पछ पटे ही तमर आसीबो एटा 180 degree, this is 180 degree. So that is what it लिखला कि it is located at 180 degree longitude. Absolutely correct, this one. International line is not a straight line, बिल्कुल. जदि हम एनसीईआरटी देखिबा, international line is not a straight line because to avoid the clashing of the time zones, ठीक अछि. So that is what जोटा कि क्लास रे डिटेल ले कुहा हिची. International is not a straight line. This is also a correct. It is a zigzag line, rather it is a zigzag line. एमती आसे international straight line. Then China has 2 time zones. बिल्कुल भूल. China रा मन रखो गोटे टाइम जोन अछि. It is only single, it's not 2, it is 1 time zone. This is 1 time zone. कोटा को जोटा कहंती China standard time हैला और Beijing standard time, CST, China standard time और Beijing standard time तक को आ जाए, that is CST, China standard time, right? Okay, then Australia has 3 time zones. Absolutely correct. So the answer देखिए कौन 1, 2 and 4. 3 गलत हो गया. So 1, 2 and 4. 1, 2, 4 को दिया B for Bombay. So answer is your B for Bombay. Is it clear to everyone? Right? B for Bombay. Answer. Next, third, who coined the sentence? किए करथिले? Geographical thoughts रो भी questions हमने पचारचुंदी. Thoughts रो questions केम देखिबा. Who coined the sentence? Give me the matter and I will build the world out of it. किए कहिथिले? माने मते matter दे, I will build the world out of it. जदि आंसर देखिबा भितर किए अछि Emmanuel Kant, Chamberlain, James and Jeffrey and Laplace हैला. Laplace जो देखिबा आंसर is D for Delhi. Laplace जो देखिबा, Laplace is basically he is associated with the nebular hypothesis theory. जेमते Emmanuel Kant भी कहिथिले, Laplace also taught the same thing, right? Laplace जो देखिबा is ए जो statement है से कहिथिले it is there is a gaseous cloud. The origin of the universe is from the gaseous cloud. This also Laplace has strongly your propounded over this one. So answer is D for Delhi. Answer is D for Delhi, right? Next, which I hope it is clear. Next, which of the following planets have the lowest inclination? अभी तो lowest inclination कोठी हैला मु बुझाई देबी. Lowest inclinations माने कोन? If I go for the lowest inclinations means जदि देखिबा, this is the जदि मु टाणुची x axis and y axis and this is your axis हैला. This is your axis. For let's say मुके earth रो नउची, this is earth axis, right? आउ एटा हला तमरो y टा हला perpendicular axis. This is your perpendicular axis. समस्ते खाता पेन धरि की नोट करनी अब. This is perpendicular axis and this is ecliptical axis or orbital axis आपको कहते हैं, or orbital axis, right? And it hala tomorrow theta tilting. जेमति हम जानछे our earth is tilting 2 and 23 and half हैला 23 and half. This is inclination 23 and half degree, right? So question पचाची lowest inclinations केते, inclination टे केते रहिची हैला. axis रो, this is earth axis केते रहिची आ भितर. So this is the basics हमें जानि के रखो, right? तो आ भितर जदि देखिबा आंसर जदि देखिबा एबीसीडी भितर it is Jupiter. जेते भी अछंती Jupiter, Mars among this question, Jupiter, Mars, Neptune and Uranus, ता भितर तम जदि देखिबा हमें it is your Jupiter. These have the lowest inclinations, right? Jupiter has the lowest inclination. Question number 5 देखिबा, right? Question number 5 देखिबा. Arrange the following in a sequential order from the surface to the inner core. कोठु surface to the inner core. एटा आसला कोठु questions टा, एटा आसला तमरो interior of the earth, right? Interior of the earth. Each chapter thala interior of the earth. This question has came from interior of the earth, right? In a sequential order surface from the inner core to the of the earth and select the appropriate answer using the code given below. हैला sequential order code surface रो नहीं कि inner core पर्यंत. आमी जानि चंती surface रो inner core पर्यंत यदि this is earth nela, if I take a cross section, right? भला भी बुझट, if I take a cross section, this is core of the earth, this is your core of the earth, right?
and this is your surface. ठीक अच्छे सरफेस नहीं कि कोर पर्यंत की लेट्स सी सरफेस नहीं कि कोर रे की आसे लिथोस्फीयर मैंटल सॉलिड कोर एंड द मोल्टेन कोर तो हमें प्रथमे देखिबा प्रथमे फर्स्ट देखिबा इट इज योर L lithosphere 1 lithosphere let's say lithosphere first the surface ru tame ascho then it is your mantle then it is your molten core is nothing but your outer core molten core GA outer core CA please make a note molten core GA outer core CA next your that is your solid core is nothing but your inner core solid core is nothing but your inner core so answer कौन है so 1 2 4 3 this is the chronology अब इधर कोटी अछि answer is your C I hope answer is your C is the correct answer right C is the correct answer ठीक अछि ए बडा क्वेश्चंस रे गोटे जिंस हिंट देबी तुमको सब बेले जते बेले भी एग्जाम रे तुमको धर डाउट हो सपोज यू आर हैविंग एनी डाउट right so always you draw a diagram तमे diagram टा draw करो से खाता ऊपर कहीं ना ए वाला क्वेश्चन this is nothing but your actually it is not geography it is in geology questions रे always diagram will help you out diagram रे तमरो कोन रहबो help करियो तुमको diagram रे तमरो clarity रहबो को जगह केम तमे देखि right 6 number question देखिबा right 6 number question which one of the following is the main volatile gas in the volcanic eruption बहुत बड़े क्वेश्चन से पचार जो volcanic eruption रे कि main gas की कोटा erupt हुए CO2 H2O carbon dioxide and SO2 volcanic eruptions again this is go to asle again geomorphology volcano chapter this is a question from volcano or geomorphology right geomorphology के रोचे को gas टा erupt हुए everyone can participate हला पार्टिसिपेट कर परिबो की होची CO2 H2O CO and SO2 जदि हम देखिबा आंसर जदि देखिबा इट इज योर H2O B बहुत आश्चर्य लगतो सर हाउ कम H2O टा केमते हो H2O इज नथिंग बट वाटर माने स्टीम एक्चुअली जब वोल्केनिक इरप्शंस हुए सेतले कोन हुए स्टीम योर जनरेट हुए हला स्टीम गैस इन द फॉर्म ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ योर स्टीम दैट इज कॉल्ड योर जोटा कि कहा जाए वाटर नॉर्मली हला सब जंका इथु होंते मन रख सल्फर डाइऑक्साइड भी कार्बन मोनोऑक्साइड भी बाहर कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर बट अमंग दैट जदि हम देखिबा इट इज योर H2O दैट इज वाटर सो दिस इज द करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे राइट ए बडा क्वेश्चंस हमको लागे बहुत सहज एग्जाम जल्दी देखतो हां बहुत सहज बट ए सहज क्वेश्चन रे कंफ्यूजन बेसी आ रहा है सो अगेन आई एम जस्ट पढेला वाले गुटिए जिंस कहे कि ऑलवेज फोकस द एनसीईआरटी को तुम जिते फोकस करियो बेसिक्स फंडामेंटल तुम क्लियर हो गुडा मेंचे भाई पढ़ी किसी लाभ नहीं हला एनसीईआरटी फोकस करो प्लस क्लास रे तुम अटेंटिव हो इट विल सफाइस फॉर टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द एग्जाम हॉल डेफिनेट इट इज वेरी डेफिनेट अच्छा नेक्स्ट देखिबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक आ भीतर इग्नियस रॉक नुह राइट बायोटाइट कॉन्ग्लोमरेट peridotite then granite again a question जदि देखिबा again it is तमर आसी geomorphology or rocks the same questions rocks or geomorphology बहुत बढ़िया क्वेश्चन सेटा किया भितरु is not ए बडा क्वेश्चन कोन होबो इट देछि not is the major important बहुत जगह questions while attending the questions students mostly samane they go for the which one is correct so if you in such type of questions I always suggest with pen or pencils whatever you have just underline that one so that you will have clarity ki no हमको ये नहीं करना है ये चूज नहीं करना है और नहीं करना है so that is what the things you are having sending a signal to your brain no it is also not an igneous rock so answer दीजिए कौन biotite conglomerate peridotite and granite so अभी तो देखिए answer is your B for Bombay biotite peridotite and granite they are igneous rock not igneous जब देखिए conglomerate जब देखिए conglomerate is basically it's an sandstone type this is your जब देखिए it is your sedimentary origin है sedimentary this is an sedimentary rocks basically sedimentary rocks है conglomerate is your sedimentary rocks हम कहेंगे so answer is your B for Bombay right B for Bombay ठीक अच्छे
Acha, everyone can participate, nothing to nothing to shy for that one. Okay, next देखिए consider कौन दीजिए 8 number question. Consider the following statements and select the correct answer using the code given below. आ भितर कौन देखिबा correct answer the एटा एक्चुअली आसला part of the continent under marine node. एटा आसला तमरो oceanography. This question is from oceanography, again physical geography रो हला oceanography questions आसी, right? Oceanography questions आसी. Question दला the part of the continent under the marine water is known as your continental shelf. Absolutely correct. Continental shelf हमें कहाँ को कहवा हला continental shelf. अच्छा एटी मु देखै दोछि continental shelf केमते रहबो. What is continental question से देखे में देखिबा continental shelf माने this one, ठीक अछि, and this is your ocean water. Let's say this is your ocean bottom, this is let's say ocean water, right? This is your ocean water. Let's say this is your ocean water, ठीक अछि. Continental shelf, here one you are standing here, this is this is your land surface area, land. The moment it breaks, this is your continental shelf, this is your continental shelf, right? This is your continental shelf, this area, ठीक अछि. This area is your continental shelf. Then here starts your continental slope, this continental slope, ठीक अछि. डायग्राम कर दोछि. Then your rise, then एट चितिक रहिला your continental rise, right? Continental rise रहबो. Then your ए जो परसेंट रहबो, then it is your this is your abyssal plain or ocean floor, abyssal plain or ocean floor ताको कहा जाय, right? So this is the basic thing that you have to understood केमते रहबो हैला ले पढिला बेले. This is very important. प्रथम land, then continental shelf, then continental slope, then your abyssal plain or ocean floor. So question summary कौन दला कि the part of the continent is under, right? Part of the continent is under the marine water is known as your continental shelf. Then this is correct. एटी हम जान ले. Next, the slope of the continental shelf is 1 degree. Absolutely correct. Actually the slope हमें देखिबा 0.5 ରୁ 1 degree भितर maximum थाए. So this is the correct answer. Slope हैला 1 degree जो देला, this is correct, right? मन रखो 0.5 ରୁ जदी देइथबो क्वेश्चन तळु को थाले क्वेश्चन ताले तमे एटा wrong मारिबो, right? Next, the continental shelf is reaches the depth about 200 meter. Absolutely correct. 200 जदी हम देखिबा continental shelf हैला reaches a depth about your 200 meter. This is also correct. So answer is your D for Delhi. जदी हम देखिबा answer is your D for Delhi. 200 meter तळु को आसी थाए. This is correct, right? Oceanography रे questions गुडा again मु कहबी oceanography जो बेस्ट पढिया पे तमे old NCERT, again NCERT is good, very बहुत clear understanding. सेति के बुझो it is enough. बहुत बढ़िया माने it is have a very thorough clear clarity रहबो सेतरे oceanography, right? Next, ए डायग्राम टा सबले मन रखतो. दिस डायग्राम इज वेरी क्रुशियल हला. आई होप जते बडी क्लास तमे आसो क्लास रे पेन पेपर एंड एटलास ने के बसिबो, यू विल हैव एन क्लैरिटी सबले, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. जस्ट अ सेकंड, लाइट डाउन करते जस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन टा आसी पुनी हला. हमर मिसी की जो करूछन एथरे यूपीएससी ओपीएससी लेवल रो भी अछि और यूपीएससी लेवल रो अछि, सो दैट हमर क्लैरिटी रहबो अंडरस्टैंडिंग. 9th क्वेश्चन देखिबा. देला कोन नेचुरल गैस ऑकर्स इन द गंडवाना बेड्स. फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को मन देख सुनो. नेचुरल गैस देला कि ऑकर इन द गंडवाना बेड्स, राइट? गंडवाना बेड्स देखिबा. सेकंड, माइका ऑकर abundance in Koderma. Mica occurs in abundance in Koderma, right? Then Dharavas are famous for excuse me, for petroleum. Which of the following given is are correct? Abhitru pacharchi abhitru correct quota ABCD bhitru. This is your ABCD and let's see which one is your correct. Let's see. First question is natural gas occurs in the Gondwana beds. Gondwana beds basically जानचंती कि Gondwana is the very primitive dita थिला तमरा tertiary आउ Gondwana. So basically natural gas जदि हम देखिबा occur in the Gondwana beds, this is हला it is absolutely wrong. Gondwana beds रे basically natural gas
न थाए कौन थाए कोल थाए ठीक अछि गंडवाना बेड्स आउ जो देखबा नेचुरल गैस ता कोठी अकर हुए मु दीटा आकार रे कहूची देखो एई क्वेश्चन बड़ा वेरी एनालिटिकल नेचुरल गैस जनरली अकर को जगह रे नॉर्मली थाए गोटे हला कि गंडवाना बेड्स रे बेसिकली कोल ओरिजिन थाए एटे दिबो तमरा टर्शियरी बेड्स हला बेसिकली एटा टर्शियरी बेड्स रो राइट अगेन माइका occurs abundance in कोडरमा भला भाबे सुनो माइका occurs abundance in कोडरमा where is कोडरमा is in आज का डेट रे कोडरमा is in झारखंड after division और segregations परे हला बिहार रो it is now in झारखंड and basically माइका माने जोटा कि हमरो ओडिया रे ताको कहते अब्र राइट mica used in your semiconductor industry mica has immense significance right so it is mica occurs in abundance in your koderma it is absolutely correct even if the city koderma is known as the your mica capital city hela मतलब mica capital रा city बहुत इंडिया रा maximum जदि देखियो mica से जगह पे so this one is correct koderma next धारावार्स आर फेमस फॉर द पेट्रोलियम ठीक अछि धारावार जदि हम देखिबा नो दिस इज रॉन्ग धारावार्स जदि देखिबा धारावार्स आर नॉट फेमस फॉर द पेट्रोलियम पई के रहइबो दिस इज रॉन्ग पेट्रोलियम पई अगेन टर्शियरी ठीक अछि पेट्रोलियम पई के रहइबो टर्शियरी और ब्रह्मपुत्र हैले धारावार्स नो धारावार्स पई जदि हम देखिबा धारावार्स हला फेमस फॉर योर एट पेट्रोलियम हबन पेट्रोलियम हला तमरो इट इज iron ore, manganese, copper, gold को AU कहंती gold हला AU हला अब पेट्रोलियम बेसिकली कोठी देखा जाय सेडिमेंटरी बेड्स रे एठी हला सेडिमेंटरी माने ब्रह्मपुत्र जदि हम चर्चा लिख ब्रह्मपुत्र रे अरेबियन सी बेसिन्स रे दैट इज वी कैन से दिस वन सो एठी हमें पाई गेले सो वन गलत एक गलत हुआ तीन गलत हुआ तले आंसर कोटा दिस वन A is also wrong 2 3 सब wrong तो आंसर इज योर B for Bombay this is an UPSC questions है maximum तो एठी हमें जानले कौन कि mica only that's you are found in your koderma and rest dharawars are famous for the petroleum that is wrong dharawar is basically famous for your iron ore manganese copper and natural gas occur in the Gondwana bed no natural gas occur in the tertiary bed basically आज जो उल्टाटा पचारिबो Gondwana पई किए Gondwana पई तमरो coals जदि हमें देखिबो इंडिया रे coals ताले coals पई Gondwana bed is your Gondwana beds are famous so एठी हमें देखिबो these are the discussions about your जदि हमें देखिबा it is your Indian commercial geography हैला एठी हमें देखिबा जदि ठीक अछि Indian energy sector क्वेश्चन पचाउछन और commercial geography हैला energy geography ठीक अछि energy India रा Indian energy geography रे क्वेश्चंस टा आसे हैला और resource geography we can say this one right अच्छा this is all about geography रा तापरे आज हमें देखिबा पुनी जेतु मिक्स करछि सेकंड रे हमें देखिबा एनवायरनमेंट रे किछरा क्वेश्चंस हमें एनवायरनमेंट पे करबा लेट्स डू few questions from also from the environment अच्छा देखिबा एठी as per first question very interesting question which as per new report by climate tech startup blue sky analytics हैला न्यू स्टार्टअप देखिया climate tech blue sky analytics which country topped in the emissions related to crop burning हमें जानछन इंडिया रे वर्तमान crop burning is a major issue crop burning is a major issue let's see कि as per the questions blue sky analytic ru किए major किए which country the making the top आंसर देखिबा ABCD भितरु who are the India China US और Indonesia आ भितरु आंसर जदि हम देखिबा it is your इंडिया हला मेजर शीत दिन वर्तमान बेसिकली कौन हुए जेतबळे आफ्टर योर खरीफ सीजन जदि वर्तमान कौन योर असला तमरा रबी सीजन रबी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ योर जदि हमें देखिबा कि क्रॉप सीजन्स योर खरीफ रबी एंड जेद सो वर्तमान प्राय तो विंटर रे तमरा क्रॉप बर्निंग और स्टबल बर्निंग समान करन सो इथरे इंडिया इज लीडिंग को स्टेट जदि हम देखिबा इट इज हरियाणा पंजाब western UP and the nearby your जदि देखिबा nearby दिल्ली ओके जो भी गांव अछि बुरारी
See, those places are covered. So answer is A. Second question देखिए, the first calf of which cattle? First calf of which cattle breed was born using in vitro fertilizations IVF in India? किए से करछि? First आ भितरु हला साहिवाल, बन्नी, ओंगल, then मुरा आ भितरु. Answer कोटा first calf. First calf जदि हम देखिबा breed was born, that is your बन्नी. मन रखो, बन्नी is the first calf. प्रथमे IVF जदि हेतला, that is बन्नी हला. बन्नी रो जदि हमें जदि देखिबा कि बन्नी, this is an cow हला. बन्नी जदि देखिबा हला बन्नी cow रो बन्नी first time हेतला एटा इंडिया रे first time हला. And that is near about जदि देखिबा 2013 July 2013 रे हला एटा हेतला your first your IVF, right? हला July hitla, it is 2000 ठीक है देखिए तो 2013 और let's say 3 ए भितर ठीक है मोर factually रोच ठीक देखि नबो क्रॉस चेक करनो 2013 और 2003 in July first India रेटा हितला, right? Next, third question, Bildwari cattle which was seen in the news was announced genetically divergent in which state? It is a cattle breed gote. This is one variety of cattle breed, that is your that is Bildwari, Bildwari cattle. Tamil Nadu, Eredela, Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Odisha, Bildwari. जदि हमें देखिबा आंसर इज योर तमिलनाडु. दिस इज ए. तमिलनाडु रे प्रथम थरो एठी हेतिला दिस बिलवाडी क्वाटल जोटा कि न्यूज रे थिला एंड जेनेटिकली डाइवर्जेंट, राइट? जेनेटिकली डाइवर्जेंट. आउ एटा इंडिजिनियसली एटा हमरो डेवलप हेतिला. दिस इज इंडिजिनियसली, इंडिजिनियस माने इंडिजिनियस माने कोन? निजर. इंडिजिनियसली डेवलप्ड हला डेवलप्ड ब्रीड. ठीक है, डेवलप्ड ब्रीड. एटा डेवलप्ड ब्रीड कैटल एटा हमर इंडिया रे ही निजर एटा हितल. दिस इज वेरी बहुत जिंस अछि. तमे देखियो एनवायरनमेंट रे जस्ट एनवायरनमेंट संगे बहुत सारा साइंस टेक जिंस भी रिलेट हेता. ठीक है, दैट इज व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ गंगेस रिवर डेल्फिन एज पर IUCN? IUCN माने कोन हला? इंटरनेशनल. IUCN माने इंटरनेशनल यूनियन फॉर, देखो जेटी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, राइट? IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर. ए भितर कोन होची? योर गैंजेटिक डॉल्फिन्स. हमर जो गंगा रे जो डॉल्फिन अछि ताकू कोन को होची? को कैटेगरी रे? एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, लीस्ट कंसर्न. आ भितर कोटा देखियो. जदि हम देखिबा आंसर एनीवन कैन से. जदि हम देखिबे ABCD भितर हम निया होची. ABCD भितर कोटा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, लीस्ट कंसर्न आउ एंडेंजर्ड. आंसर जदि देखिबा इट इज एंडेंजर्ड. ठीक अछि. सो वर्तमान बुझो व्हाट डू वी रियली मीन बाय द एंडेंजर्ड. एंडेंजर्ड माने कोन? व्हाट डू वी मीन बाय द एंडेंजर्ड? मीन्स endangered माने as per IUCN the meaning of endangered, just I am describing the meaning of endangered. environment रे जिनसडा को बुझिबा. देखो ज्योग्राफी रे तमे पाई जियो, बट environment रे तमर जो तार जो वर्ड गोडा वर्डिंग गोडा एथर कर म देखुतली OPSC क्वेश्चंस रे. एथर म देखुतली हला एटा हमर क्वेश्चन टा देखुतली. बहुत सारा वर्डिंग्स रे तमर मेनली रहूची. को वर्डिंग्स रे हमर एनवायरनमेंट रे क्वेश्चंस रे वर्डिंग टा को बुझिले ही पिला बोल करते. जेमति तमर आसुची बहुत सारा क्वेश्चंस हमको मु करे भी एथरे इजी रहइबो तमर अंडरस्टैंडिंग पय हला. अच्छा, कौन रहइबो एंडेंजर्ड माने? व्हिच इज ए थ्रेट, ए स्पीसीज in a threat of extinct or extinction, in a threat of extinction from the world, hela, from the world. माने इट कौन ला? थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट टू अंडरस्टैंड.
माने से जो species it is and having threat to got extinct, that is called your जदि हमें देखिबा कि endangered माने, right? Extinct माने already हे जाइछ, माने जेमते मु कहबी डोडो बर्ड हैला, डोडो बर्ड गोटे अछि जोटा कि आगुरु माडागास्कर रे देखा होतरा, डोडो बर्ड ऑलरेडी एक्सटिंक्टेड, बिल्कुल नहीं, वर्तमान तारा डीएनए नहीं कि ताको कल्चर करा होछि डोडो बर्ड हैला। उल्ली मामथ गोटे अछि, उल्ली मामथ हैला जोटा कि ऑलरेडी वंस अपॉन ए टाइम ड्यूरिंग कहा जाय कि आज की 5000 सॉरी 10000 इयर्स बैक आइस एज समय उल्ली मामथ देखा होतला, आइस एज परे परे वर्तमान सेटा बिल्कुल ही ना एक्सटिंक्ट डोडो बर्ड उल्ली मामथ हैला। एक्सटिंक्ट माने ऑलरेडी दे समाने माने नाहांती हैला, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड माने दे आर जस्ट माने एटा तो चलिबो एंडेंजर्ड, इट स्पीसीज इन ए थ्रेट, एटा हला मोस्ट वल्नरेबल माने पोचिंग किलिंग एंकर होची दे आर अबाइव टू सम एक्सटेंट, जेमति कहबे कि नीलगिरी थार पोजीशन वर्तमान टिके बाइलन बट स्टिल इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। लीस्ट कंसर्न माने एंकर जेमति ऑलिव रेडी टर्टल वर्तमान हेला लीस्ट कंसर्न, माने आगुर जदि मु 12-15 इयर्स बैक देखिबी सेते बेले यो WWF सेटा को रखितला हमर कोथरे योर क्रिटिकल एंडेंजर्ड वर्तमान लीस्ट कंसर्न बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, पीपल अवेयरनेस, गवर्नमेंट एफर्ट एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स, नाउ ऑलिव रिडली टर्टल now is comes from the category or promote to the category of your least concern rather than from endangered or critically endangered। बहुत गुडे जिनस एथर देखो सीएस क्वेश्चन रे एथर पकई छी सु क्वेश्चन गुडा, सो गोटे क्वेश्चन जतले तमे अटेम्प्ट करूचो बी मेक श्योर दैट तमे तार ऑप्शंस गुडा को भी कल्चर करो, खाली एमति कर देला हबन। आई ऑलवेज बिलीव दैट वन if you go for solving suppose let's say you are solving the 100 questions रो ऑप्शंस को भी तमे ट्राई करो, इल मेक श्योर दैट इल तमे हेटो आहुरी 300 क्वेश्चन पाइ परियो, माने 100 प्लस 3टा ऑप्शंस हला, गोटे ऑप्शन ठीक हला 3टा ऑप्शन माने 400 क्वेश्चंस तमे पाइ परियो। मेंचे गुडा क्वेश्चंस करी कंफ्यूजन क्रिएट किछ नै, सबले एनालिसिस को धरो, रूट कॉज को जानो, okay, so that will save your time, efforts and your enrich your confidence, overall knowledge also, right? Next question देखिबा, question number 5, which union ministry has set a full-fledged sustainable development cell? बहुत बड़ा क्वेश्चन, को मिनिस्ट्री टा फुल फ्लेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल डेवलप करछ? मिनिस्ट्री ऑफ देखिबा एबीसीडी भितरु हला, एबीसीडी भितरु मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, देन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई माने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हला, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई माने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। व्हिच मिनिस्ट्री सेट ए फुल प्रेजेंट एसडीसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल? किया भितर देखबा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल? आंसर, अरे इतने जन देखुछ कि पार्टिसिपेट करो, आई लव जितरे नथिंग टू बी, सी फील फ्री टू डू मिस्टेक, राइट? सो आंसर जि देखबा इट इज योर बी फॉर बॉम्बे, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कोल। बहुत जन संग संग मारिबे कि नहीं सर, इट लुक्स लाइक एज इफ कंफ्यूजिंग बले देइथबो, जदि इफ यू गो टू द स्टेटमेंट बेस्ड जदि देखिबो चॉइसेस रे से देइथबो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इट्स अपीयर्स दैट this could have been your correct choice, but absolutely एमते हेइ नथा। मिनिस्ट्री ऑफ कोल तमे ने क्वेश्चन उठो कि सर एमती कोन पई दिया तो व्हाई मिनिस्ट्री ऑफ कोल, इट रिलेट्स टू योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हाई इट इज कोल, समटाइम्स द असाइनमेंट हैज गिवन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट असाइनमेंट देई था हैला रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री, राइट? सो देयर इज नथिंग टू बी कंफ्यूजन। ए बडा क्वेश्चंस रे हम कोन हो इंडिया ईयर बुक गोटे आसे सेथु तमे पढिबो, बहुत सारा जिंस तमर क्लैरिटी रहबो से हैला, एंड आल्सो यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर रेगुलरली, दैट इज आल्सो helps to strengthen your knowledge base, right? Next question, fifth kala, next question देखिबा, consider the following: star tortoise, monitor lizard, pygmy hog, then spider monkey। भला क्वेश्चन टा सुनो, कोन देली मु? star tortoise, monitor lizard, pygmy hog, spider monkey आ भितर हला, which above are naturally found in India? आ भितर इंडिया रे naturally कोडी देखा जाय, एटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन। naturally आंक भितर देखा जाय इंडिया रे के को माने 1 2 3 only, then 2 3 only, 1 4 only, 1 2 4, 1 2 3 4 सब जांक अछि। let us know star tortoise, this is बिल्कुल इंडिया रे एटा देखा जाय, right? if you go to the Bay of Bengal, Andaman Sea, you will find this star tortoise, right? Monitor lizard, this is also
जदि तुम जीव वेस्टर्न घाट एरिया तुम मॉनिटर लिजर्ड तुम पाई पार इंडियन जंगल्स रे हैला इवन इफ इन द सदर्न जंगल्स ऑफ योर केरला रे हैला केरला तमिलनाडु कर्नाटक रे यू विल फाइंड दिस मॉनिटर लिजर्ड आल्सो पिग्मी हॉग दिस इज एब्सोल्युटली पिग्मी हॉग भी हमर एठी देखा जाय इंडिया रे देखा जाय दिस इज वेरी इना न्यूज़ रे थिला एवरीथिंग हैला पिग्मी हॉग तो बहुत माने सुना हुआ नाम है देयर इज नथिंग टू बी कंफ्यूज अबाउट दैट वन रादर सोठी हम कोन जानले ए तीनटा हमर इंडिया रे देखा हुआ हैला you are found in India. This is found in India. Found in your terrestrial ecosystem or aquatic ecosystem, of course. Spider monkey is not native to India. I'm just declaring spider monkey is not native to India. Rather, spider monkey जदि देखिबो it is देखा जाय कोठी. This is your Amazon forest, हैला South America रे. Amazon forest, Mexico, हैला मेक्सिको एठी देखा जाय अमेजन फॉरेस्ट कोठी साउथ अमेरिका अमेजन फॉरेस्ट इज योर साउथ अमेरिका रे स्पाइडर मंकी इज नॉट आई एम रिपीटिंग स्पाइडर मंकी इज नॉट नेटिव टू इंडिया बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं स्पाइडर मंकी इज नॉट नेटिव टू इंडिया स्पाइडर मंकी देखा जाय कोठी अमेजन रेन फॉरेस्ट दैट इज योर साउथ अमेरिका माने जदि पुणी मेक्सिको आसला मेक्सिको रे मेक्सिकन फॉरेस्ट रे मेक्सिको फॉरेस्ट रे एटा देखा जाय तो ता माने जदि हम देखिबा जदि मैं एटी बनौछि डायग्राम रे देन योर देखिबा जदि हला तो अमेजन फॉरेस्ट दिस इज योर अमेजन फॉरेस्ट दिस इज अमेजन फॉरेस्ट मेक्सिको ऊपर अछि दिस इज योर मेक्सिको राइट दिस इज योर मेक्सिको एंड दिस इज योर अमेजन रेन फॉरेस्ट दिस इज एंटायरली अमेजन फॉरेस्ट अमेजन टाइट जाई के रिवर अमेजन हला अमेजन रिवर this is South America Amazon river this is Amazon forest this is your Amazon rainforest kahi ki hoche tropical rainforest because tropic the equator pass kariki jauche Amazon upare ठीक अछि so ei jaga re spider monkey dekhe and for your information this particular spider monkey hela jodi emane that looking very cute jodi mari ki dekhe spider monkey they is having the your spider shape so ei जगह ही समय देखा जाती मोस्ट ऑफ द लैटिन अमेरिका माने मेक्सिको रु नेकी टिल एंटायर साउथ अमेरिका जंगल्स रे माने देखा जाती फॉरेस्ट रे राइट सो एठी हम कोन देखले आंसर सो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर 4 हबनी 2 and 3 हबनी के 1 and 4 हबनी के 1 2 3 4 हबनी सो दिस इज द करेक्ट राइट आई होप एवरीवन गॉट इट दिस वन हला स्टार टॉर्टोइज मॉनिटर लिजर्ड अगेन आई एम रिपीटिंग स्टार टॉर्टोइज मॉनिटर लिजर्ड पिग्मी हॉग एंड स्पाइडर मंकी दे आर हला जदि एई तीनटा देखियो तीनटा इंडियन रे स्पाइडर मंकी इज इन साउथ अमेरिका मेक्सिकन फॉरेस्ट रे राइट और लैटिन अमेरिका सो आंसर इज ए अच्छा एया पूर्वपुर मु गोटे असाइनमेंट तुम मानकु देइथिली लेट्स सी गोटे असाइनमेंट देइथिली मन रखो ता पूर्व क्लास में तुम गोटे असाइनमेंट देथरा आई होप आई रिमेंबर फर्स्ट असाइनमेंट 1 मु देइथिली सेटा म आज सॉल्व करछि काउंटर बीडिंग हला काउंटर bonding is method of soil conservation this is a one type of soil conservation counter bidding soil conservation is used in both desert margins liable to strong wind actions low flat plains close to the stream course liable to the flooding scrublands liable to the spread of weed growth none of this kon hai paribo anyone can say प्रथम जानिबा what is the meaning of counter bidding kon counter bidding माने kon this is counter bidding means this is an mostly counters mane hela making terraces to check the soil or water runoff soil loss or water runoff ताको कहा जाय soil loss or water runoff जो गोटा हेप थाए सेटा को कहा जाय soil erosion check the soil erosion and this counter bidding is basically कोठी होई जाय in hilly and mountainous areas ए जगह रे से माने करंती where agriculture practice करा जाए basically ए जगह रे hilly and your mountainous area रे basically आपको करा जाए counter bonding
है मन रख दिस इज वेरी क्लियर काउंटर बॉन्डिंग इज प्रैक्टिस इन हिली है हिली आउ माउंटेनियस एरिया रे एटा रखा जाय हिली एंड माउंटेनियस एरिया राइट हिली एंड माउंटेनियस एरियाज रे काउंटर बॉन्डिंग एटा रखा जाय राइट सो आंसर जदि हमें देखिबा आ भितर कोन ना डेजर्ट मार्जिन लेवल स्ट्रांग विंड एक्शन ये भी गलत है दिस वन इज कंप्लीटली रॉन्ग low flat plains close to the stream course liable flooding this is also wrong and scrublands liable to the spread of weedy growth this is also wrong so answer is D for Delhi none of these एवडा questions हला it seems कि appear गोटे रहता कि बुझिबाटा बहुत जरूरी सेठी कोन दला question soil conservation पाई soil conservation कोडी कर if I go to the if you go to the Darjeeling if you go to the Sikkim if you go to the your Uttarakhand you will find this kind of practice counter bonding basically China रे भी तमे देखियो counter bonding सेटा हुए कोन पे hilly areas सेठी भी चाष हुए they also cultivate to for rice and other crops for their sustainable livelihood so that is what counter bonding is widely practiced in hilly terrain areas hilly and mountainous areas so answer is D for Delhi answer is D for Delhi I hope it is clear to everyone right okay so this is all total of today's session again जदि कहबी कि किछि अनाउंसमेंट मु करबी अगेन जदि अगेन टेस्ट सीरीज ऑलरेडी 2 नवंबर रो जीएस रो स्टार्ट हे जनरल स्टडीज रो ऑलरेडी स्टार्टेड 2 नवंबर रे आरंभ हे छि ऑलरेडी स्टार्टेड ऑलरेडी तो जो माने भी जॉइन करिया चाहछो यू कैन व्हाट्सएप मी and this is my number hela this is a number रे तमे करिया चाहबे 7978090997 बहुत पिला आछुंती ऑफलाइन रे ऑनलाइन रे बहुत the exam has commenced from this last Sunday 2nd November this is GS also जदि देखिबा geography optionals मु नहीं geography optional also it is very going to start because exam टिके अछि तो it is also going to start very soon geography optional both offline and online both all offline and online the test series are already started already ठीक अछि general study started geography optional is will be started in very shortly अच्छा classes जदि हमें देखिबा कि batch optional batch already this is third batch is running geography optional both again offline b and offline batch and also the online batch offline and online batches are already there right GS already have started this year's it nahi mane advertisement nahi but GS batch already has started from this year right so anyone who is interested we can you can connect with me the number again hela a number jodi dekhibi e number you can write 7978090972 you can connect with me for any queries you can connect with me so thank you all of you thank you so much for staying with me again next sessions रे पुनी जेमते मु कहली कि सप्ताह रे जो भी रहिबा हमरा क्वेश्चंस सीरीज रहबो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट रो and also the subject analysis also right so thank you so much thank you everyone thank you so much for having patience with me we'll again meet in our next sessions thank you so much have a good day thank you and happy Kartik Purnima kali bahut bada dino and I hope everyone will stay happy and get enjoy we'll again meet with the this type of your conceptual sessions that strengthen your preparations thank you so much and many good wishes from the Odisha civils for this upcoming this Kartik Purnima celebration thank you so much thank you everyone bye bye thank you